वेरिएबल्स और फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं. वेरिएबल्स, functions, and equations are basic components of any mathematical models, and these are required to solve any problem. This is also the case of any economic model, no matter how simple or complex it is. They are essential for driving a set of conclusions which follow from the assumptions made. इन टर्म्स को मैं डिफाइन करता हूं. डेफिनेटली इनका यूज है हमारे मॉडल्स के अंदर. व्हाट इज अ वेरिएबल? यू नो, एनीथिंग whose magnitudes remains on changing. It is known as a variable. Let me define a variable here. A variable is a quantity whose value or magnitude can change. Thus, it is something that which can take the different values. For example, pressure, temperature, height, and weight are a few examples of variables. A variable can assume different values. It is represented by symbols. For example, temperature के लिए आप ये इसको C से मीन और फॉरेन हीट से, और इसके अलावा फीट से, किलोग्राम से, हाइट्स को किसी और फॉर्म में इंचेस में. ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो वेरिएबल को डिफाइन करते हैं. एंड नॉट बाय अ स्पेसिफिक नंबर. तो हम इनको डिफाइन कर रहे थे वेरिएबल्स को अल्फाबेट्स के साथ, सिंबल्स के साथ. ये अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ आपके कॉमनली यूज्ड एबीसी में हो सकते हैं, या किसी और फॉर्म में हो सकते हैं जिसको आप सिंबॉलिकली डिफाइन करते हैं और बाद में इनको कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं. बट रिमेंबर, ए नंबर इज नॉट अ वेरिएबल, but an alphabet that contains the value of a particular variable, it is known as variable. Now, value of a variable is actually the numerical size of a variable that is called the value of a variable. For example, if the price of vegetable ghee is rupees 10 per kilogram, the value of variable will be 10. And if the price changes to rupees 15 per kilogram, the value of variable which changes to 15. It is clear here that the value is going on change from 10 to 15 rupees per kilogram. तो चेंजिंग जो बिहेवियर है ये इसको आप वेरिएबल कहते हैं. Another thing is there, that is the range of a variable. What is the range of variable? A set of values that a variable can assume during a discussion is called the range of a variable. The lowest value of a variable will be called a lower limit, and the highest value of the variable will be called upper limit of the variable. For example, we can observe that lower limit of variable is 10 and the upper limit it is 15. सो क्लास इसमें आपने इनके दो एस्पेक्ट्स को देखा जिसको आप लोअर और अपर में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आज की हमारी बेसिक डिस्कशन जो है इंशाल्लाह लास्ट डेज में आप हमारी जो कुछ बहुत मेच्योर डिस्कशन होगी इसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस जो है ना वो मालूम होगा इंशाल्लाह. बाय द एंड ऑफ डे हम कुछ ना कुछ नया लर्न करके इस सेमेस्टर से मूव करेंगे. मगर मेरी गुजारिश है कि ये जो बेसिक डिस्कशन है इसको वन टाइम अगेन आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए. जस्ट ओपन योर नोटबुक्स. हमारे लेक्चर्स के साथ साथ अपने बॉल पेन को एक्टिव रखिए और ये जो इंफॉर्मेशन है इसको आप चॉक डाउन करते रहिए साथ साथ. Anyhow, the sum of the variables from microeconomics or business are as follows. Price, that is represented by P. Quantity demanded, it is represented by QD. Quantity supplied is QS. Marginal utility is UMU. Profit
Profit is represented by pi. Wages are W. Revenue is R. C stands for cost and total product is TP. Anyhow, there are many other examples. Some variables from macroeconomics, these are income. Please forget the microeconomics or macroeconomics. Just concentrate on the types of variables. Income is represented by Y. Consumption is C. Investment is I. Government spendings G. Exports, imports, rate of interest, unemployment, inflation, and savings. These are represented by the respective alphabet. Now we are going to move for the types of variables. These are the types of variable, but these are not complete types of variables. कुछ types हैं जिनको हम इसमें शामिल कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी types हैं जिसको हम with the passage of time discuss करते रहेंगे. Now please see there are almost 6 types of the variables. Number 1, it is continuous variable. Number 2, it is discrete variable. Number 3, it is endogenous variable. And number 4, it is exogenous variables, dependent variables, and independent variables. From our early discussion, we are only familiar with the 2 types of variables. One of them, it is dependent variable, and other, it is independent variable. But these 4 other types are, I think, new for us, but these are equally important. इन variables की type से हम आज कुछ familiar होते हैं और इनकी different examples को भी discuss करते हैं. Now please let's see one or the first type, it is continuous variable. जैसा कि इसका नाम आपको बता रहा है कि ये कंटिन्यूटी इस वेरिएबल में पाई जाती है, इससे पहले कि मैं इस वेरिएबल को डिफाइन करूं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल. आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए. तो मैं एक सेंटेंस में सिर्फ आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल. याद रखिए, any information or variable that contains quantitative data with jumps, that is known as discrete variable. Any variable that contains the continuity in its data set or values, it is known as continuous variable. Please एक और बात आपसे शेयर कर रहा हूं. Continuous variable is always a measurable variable, whereas discrete variable is always a countable variable. दोबारा देख लीजिए, discrete variable is a countable variable, whereas your continuous variable, it is measurable. Why it is measurable? As we can measure the heights of a particular student, weight of a particular student, range in inches, or any other scale or measurement in which can measure the continuous variables. What about the discrete variable? Discrete variable, that is a countable variable. If it is countable, then we can easily define this sort of variable in terms of number of students in a class. You can count each of them, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Another, it is the example, the number of chairs in a classroom, you can also count those. Any other variable that you can count, or it contains the jumps, or it contains the gaps between the variables. Let me define each of them separately. Continuous variable is the one which can assume any value within the given range. In other words, it is a variable that can vary without interruption. For instance, weight and heights are continuous variables. Since the weight and height of a person increases or decreases steadily without jumping any values, the graphical representation of a continuous variable, for example,
weight is shown. अगर आप इस ग्राफ को देखिए तो जरा गौर से देखिए, आज हमारी फंडामेंटल डिस्कशन है और इंशाल्लाह हम कमिंग डेज में ग्राफ को बनाने का बाकायदा तरीका सीखेंगे. Let's see, there are two axes. One of them it is x-axis, another it is y-axis. Y-axis is actually a vertical axis, whereas your x-axis is horizontal. Along horizontal axis or x-axis, we are going to implement years. These years are actually in numbers of first, second, third, fourth, five. Or you can say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Remember, there must be the equal difference between these values. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scale आपके पास है, आपके पास पेपर मौजूद होता है. There must be equal difference or jump or gap between these informations. Along y-axis, we are going to put the values or the weights of the students. As you know, weights are or the heights are the measurable values. अगर आप इनको measurable कहते हैं तो its range is given in between 0 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 60, 60 to 70, and 70 to 80. The weights or the value of weights can assume any value from the range of this value. The range is actually from 0 to 80. तो किसी में भी इंटरवल में वैल्यू जो थी वो लाई कर सकती थी. इसीलिए अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, मेरे पास वैल्यूज तो मौजूद नहीं है, मगर अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करें, दैट ग्राफ इज एन इंक्रीजिंग बट एट द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ग्राफ. अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो ऑरिजिन से स्टार्ट होता है. इस ग्राफ में कंटिन्यूटी पाई जाती है. As can be seen in the figure above, the weight of individual starts at origin O or 0 kilogram and assume all the values within the range of 0 to 80 kilogram. Let me discuss another type of the variable, that is discrete variable. A discrete variable is one which can take only certain values within the given range. That is, a variable which can only assume specific values with gaps or jumps between each value. The price of a commodity is a good example of the discrete variable. The figure given shows the hypothetical prices of goods, such as fruits, shown with respect to time. As can be seen, the price of a good takes on only the discrete values, such as price is equal to 2, price is 6, price is 1, 4, 5, or 3. And not the values between, for example, 2 and 7, 6 and 2, or the price 4.4 or 3.7. It is illogical. So the logical price is actually 1, 2, 3, that is accountable. तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे वीक्स को लिया जा रहा है. फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ, 5 एंड 6. अलोंग वर्टिकल एक्सिस देयर इज प्राइस, और प्राइस देख लीजिए आपकी इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है अलोंग वर्टिकल एक्सिस. सो बार्स आर देयर, दीज बार्स रिप्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर वीक व्हाट इज द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल. In others, means second week, the price of the vegetable was 6. In the third week, it was less than 2. I think it is 1. And in the next, it is actually 4. And the next, it is 5 and so on. So these values are discrete variables or discrete data. Another type of variable class, it is very much important for you that we are going to introduce. I think it is our first time to introduce endogenous variable and the exogenous variables. These are the different from the dependent variable and independent variable. Before we introduce endogenous and exogenous variable, let I differentiate the endogenous variable from the exogenous variable. Sometime class in our model we are given with the various values of the variables. कोई एक मॉडल जब हम इसको सॉल्व करते थे
तो हमारी ये प्रैक्टिस रही है हमारी स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स के बाद हम जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ चुके, तो पर्टिकुलरली किसी मॉडल की वैल्यूज जो थी वो आपको गिवन होती थी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स वाई जी में से एक्स को कैलकुलेट करना था, मगर वाई और जी की वैल्यूज आपको गिवन थी। ये जो वैल्यूज आपको गिवन थी, इन वैल्यूज को मैं एंडोजिनस वेरिएबल कहता हूँ। और वो वैल्यू जिसको आपने कैलकुलेट करना था गिवन नहीं थी, इसको आप एक्सोजिनस वेरिएबल कहते हैं। मैं इसको जरा किसी और मैनर में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेट आई डिफाइन द एंडोजिनस वेरिएबल. An endogenous variable is one whose value is determined within a framework of an economic model or any mathematical model or statistical model. A variable appearing as a dependent variable in an equation is an endogenous variable. जैसे मैंने अर्ज किया कि x, y और z में से अगर आपको y और z की वैल्यूज गिवन होती थी, तो y और z आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे देखा जा सकता था। In the analysis of the market determination of wheat prices, the variable p is endogenous. So what is an exogenous variable? An exogenous variable is one whose value is not determined within the economic model or mathematical model or statistical model, but which plays a role in the determination of the values of the endogenous variables. तो जिनको हमने कैलकुलेट करना होता है अल्टीमेटली इन वैल्यूज को आप एक्सोजेनस वेरिएबल कहते हैं. Another type it is dependent variable. क्लास में आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर ये हमारा सेशन अभी विद इन 1 और 2 मिनट्स एंड हो जाता है, इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा और इसी लिंक से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे. Okay, dependent variables. The dependent variable is a variable on the left hand side of the equality sign in an equation. Its value is dependent or determined by those of the independent variables on the right hand side. For example, y is equal to 5 plus 2x, whereas x is equal to 2, 3, and so on up to 8. Now, y is our dependent variable because this variable is depending upon an independent variable that is x. और इस इक्वेशन को जरा देखिए, ऑल्दो कि हमारा ये क्राइटेरिया अभी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको सिर्फ इस इक्वेशन से फेमिलियर करने के लिए एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ. y is our dependent variable, whereas on your right hand side there is 5 plus 2x. ये जरा गौर से देखिए, the sign is plus. It means there is positive relationship between dependent and independent variable. Our independent variable is x. Our dependent variable is y. Our constant is 5 and our coefficient it is 2. That coefficient it is actually related with the independent variable. Now independent variable और इस independent से पहले एक लाइन मेरे पास मौजूद है. In the equation QD is equal to 5 minus 0.75p. Here dependent variable is quantity and independent variable is price. But there is negative relationship in between dependent and independent variable. Because negative sign is there, it represents if there is 1% increase in the independent variable, then there will be decrease in the dependent variable. इसका मतलब ये है कि इन दोनों में opposite relationship जो है वो पाया जा रहा है. Whereas rupees 1 to 14 is there, quantity is the quantity demanded that is determined by the value of p, so it is a dependent variable. Next, it is independent variable. An independent variable that appears on the right hand side. जैसे अभी आपने ऊपर x को independent variable कहा. ये इस independent और dependent variable को define करने तक मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अभी functions को हम define नहीं करेंगे because it is our introductory class. Next session में इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे हम इनकी कुछ formations को, functions को, types of functions, equations और इसकी generalization की तरफ जाएंगे और बेसिक जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स के कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको रिलैक्स करेंगे
और फिर इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कुछ अप्लाइड चीजें पढ़ेंगे। बहुत सारी नई टेक्निक्स होंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और बहुत सारी नई जो हमारे पास मॉडल सॉल्विंग कुछ इक्वेशंस होंगी वो भी आपसे शेयर करूंगा।